Hello everyone. Now I will take the PYQ number 7 in the induction motor series. A 6-pole 50 Hz 3-phase induction motor is running at 950 RPM and has a rotor copper loss of 5 kW. Its rotor input is in kilowatt. Option A 10, option B 50, option C is 100, option D is 95. तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जैसा मैंने आपको बोला हुआ है माई procedure is to write all the parameters which is given in the question. So we can say here is given number of pole is 6, supply frequency is given the 50 Hz और यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है 3-फेस इंडक्शन मोटर की. रनिंग स्पीड इंडक्शन मोटर का दिया हुआ है, मतलब हम बोलेंगे रोटर स्पीड जो है वो दिया हुआ है 950 RPM. और बेसिकली हम बात करें तो जो रोटर कॉपर लॉस है, राइट, तो यदि हम बात करें तो जो रोटर कॉपर लॉस है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है. सो वी कैन से दी रोटर कॉपर लॉस इज गिवन विच इज़ 5 किलोवाट. तो हमको बोल रहा है इट्स रोटर इनपुट इन किलोवाट. तो बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है, रोटर इनपुट निकालना है इन द किलोवाट. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर नाउ आई विल गिव यू one concept. By that directly you can find the answer of this question. So we can relate the rotor copper loss with the rotor input. So we can say the rotor copper loss will be equal to the S times of the rotor input. Okay, directly by using this you can find the answer. याद कर लीजिएगा इसको आप, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. रोटर कॉपर लॉस विल बी इक्वल टू एस टाइम्स दी रोटर इनपुट. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दी वैल्यूज़. मतलब ये जो एस है मतलब ये स्लिप है, तो हमको स्लिप फाइंड आउट करना होगा. और स्लिप यदि हम बोले स्लिप हमको मालूम, दिस इज गिवन द एन एस माइनस एन आर बाई एन एस. ओके, तब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, सिंक्रोनस स्पीड जो हमको मालूम है 120 एफ बाई P. So we can say 120 into supply frequency is 50 Hz and number of pole is 6. So we can say the synchronous speed will be how much? That will be 1000 RPM. RPM is the unit of synchronous speed. And NR is given in the question which is 950 RPM. Directly we'll put here. So we'll get slip. This is 1000 minus 950 divided by 1000. So this become the 50 divided by 1000. So we can say 0.05 will be slip. Slip is the unitless. So this is the value of slip. अब slip की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. तो रोटर कॉपर लॉस हमको मालूम है. So the rotor copper loss is how much, which is given the 5 किलोवाट. ध्यान रखिए किलोवाट में ही है, डायरेक्टली हम 5 पुट कर रहे हैं. एंड दिस इज गिवन, rotor copper loss is given 5 kilowatt, right? And here we have given the rotor slip value is what we have found 0.05 into we need to find the rotor input, right? So if we'll solve this one, so we can write the rotor input will be given as the 5. Okay, so this will be given as the 5 divided by we can say 0.05. So ultimately we can say this will become how much, 100, and because we are taken this is in the kilowatt, so the answer is by default is how much, this is the 100 kilowatt. So the rotor input will be how much, rotor input will be 100 kilowatt. So this concept is very important for this particular problem. So if you have given any value, if you are given the values of any two parameters, then we can find the third parameter from using this. Okay, so the option for this particular PYQ will be option C. So 100 kilowatt is the answer. Thank you.